Hello friends, so welcome back to my channel. So let us start another video on German language. So today we are going to start tenses in German. So there are 6 tenses in German: present, present, perfect, perfect, present perfect, and preteritum, simple past, and plus calm perfect, past perfect, futur, eins, future, and futur zwei, future perfect. तो जर्मन में 6 तरह के टेंसेस होते हैं केवल: प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट. सो लेट अस टॉक अबाउट प्रेजेंस और गेगनवार्ट, present indefinite or continuous. So before starting learning tenses, first of all let us know verbs. So most German verbs end in en with the exception of some that ends in n, means sein and tun, and a handful that end in ern. For example, wandern, ändern, and eln, handen or jamen, and ieren, spazieren. तो ज़्यादातर जो वर्ब्स होती हैं जर्मन में en पे एंड हो जाती हैं, पर कुछ वर्ब्स हैं जो en पे एंड नहीं होती हैं, जैसे n पे एंड होती हैं, ern पे होती हैं, या eln पे, या फिर ieren, इस पे भी एंड होती हैं. तो ज़्यादातर मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं en एंडिंग. अब देख लेते हैं हम कि स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ब क्या होता है. जैसे वर्ब है हमारे पास गेन, तो इसका स्टेम बोलते हैं उसको, en हटा के जो आता है हमारे पास, तो इसका स्टेम है GEH, गे, प्लस एंडिंग इज en. So the meaning of this is to go. Second one is zagen, zag plus en, to say. Common, com plus en, to come. Wandern, wander plus n, to wander. Handen, hand plus eln, to act. Spazieren, spas plus ieren, this is the ending, and the meaning of this is to walk. So presence, German present tense is used when something is taking place, means present continuous, or takes place often, means present indefinite, or will take place in near future, means future, or has been taking place for a time period, means present perfect continuous tense. सो प्रेजेंट जो टेंस यूज़ होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी यही होता है, फ्यूचर के लिए भी आ जाता है कभी, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी यही एक टेंस है जर्मन में. नाउ लेट अस लर्न अबाउट कॉन्जुगेशन. जर्मन वर्ब्स हैव टू बी कॉन्जुगेटेड, विच मीन्स दे चेंज देयर एंडिंग्स डिपेंडिंग ऑन हु और what you are talking about, whether the verb refers to a singular or plural noun, and which tense you are using. तो शॉर्ट में ये है कि जो जर्मन वर्ब्स होती हैं उनकी एंडिंग चेंज होती रहती हैं, और उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन. जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब कॉमन, स्टेम इज कॉम and ending is en. So how to conjugate it? It is a regular verb. So first one is pronoun and verb stem plus ish and verb stem plus e. बस इसके साथ हम जो verb stem होगा उसमें हम e लगा देते हैं. do जो होगा उसके साथ हम st लगाते हैं, and ear, g, s, मान and ear, इन सब के लिए हम t लगाते हैं केवल stem में, and where, g, z, इनमें हम कोई चेंज नहीं करते, यानी कि en लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ish, comma, I come or I am coming. Du kommst, you come or you are coming. Er, sie, es, man, ihr kommt. He, she, it or one or you all comes or come. Where, sie, sie, common. We, you, they come or coming. जैसे आपको केवल स्टेम में ई लगाना है इश के लिए, एंड एस टी लगाना है डू के लिए, एंड एयर, जी, एस, मान और ईयर के लिए केवल टी यूज़ करना है, एंड वेयर, जी, जी, इन सब के लिए आपने केवल
verb लगा देनी है common. Some more examples here. Ich komme, is gehe, is mache. Du kommst, du gehst, du magst. Sie es man, ihr kommt, geht and macht. Wir sie es kommen, gehen or machen. Ich komme means I am coming or I come. Du kommst means you are coming and you come. Sie es kommt means he, she, it is coming or comes. Ihr kommt means you all are coming. And wir, sie common means we, you and they are coming. Here is the list of some regular verbs. Wohnen to live, kommen to come, fragen to ask, leben to live, spielen, sammeln, wandern, studieren, glauben, sagen, reden and arbeiten. IEREN ending verbs, German verbs whose infinitive stems end in IEREN have the same endings as German regular verbs. For example, telefonieren. Ich telefoniere, du telefonierst, sie es telefoniert. Here are some verbs IEREN ending. Here are some other rules for conjugation. Adding E to the stem. Sometimes we have to add E to the stem also. So rule number 1, if the stem ends in D and T, means D and T ending stems. If the infinitive stem ends in D or T, then E is inserted after the stem in the do, er, sie, es and ear forms. अगर किसी वर्ब का जो स्टेम है वो डी और टी पे एंड हो जाता है तो उसमें हम जो है स्टेम के बाद क्या लगाते हैं ई ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैंडन टू सैंड, तो इसका स्टेम क्या है जैंड, SEND, तो डी पे एंड हो रहा है. तो कॉन्जुगेशन देख लेते हैं इसका. डू जेंडेस्ट, EST ऐड कर दिया, ई ऐड किया है. डू आर बाई टेस्ट, ARGS ईयर, जेंडेट एंड आर बाई टैट. Ich gender, ich arbeite, wir sie senden and arbeiten. No change. There is a list of D and T ending stems. Finden, warten, raten, reden, baden, wandern, heiraten, kosten, halten, schelten, schneiden and writen. Rule number 2, M and N ending stems. If the infinitive stem ends in M or N preceded by other than H, L, M, N, R, then E is inserted after the stem in the do, er, sie, es and ear forms. For example, atmen, to breathe, stem atm. ये रूल ये कहता है कि अगर कोई जो स्टेम है वो एम या एन पे एंड हो जाता है और उससे पहले एच, एल, एम, एन एंड आर ना आए, मतलब इनके अलावा कोई भी और अल्फ़ाबेट आ जाए तो हम ई लगा देते हैं उसमें. आत्मन टू ब्रीथ, स्टेम आत्म. सो डू आत्मेस्ट, एयर जी एस ईयर, आत्मेट एंड इश आत्म, वियर जी आत्मन. एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे क्वाल्मन टू, इसका स्टेम है क्वाल्म. इट ऑल्सो एंड्स इन एम बट प्रेसिडेड बाई एल, सो देयरफॉर डज नॉट फॉलो द रूल. इसका स्टेम भी एम पे फिनिश हो रहा है, एम पे एंड हो रहा है, बट उससे पहले एल है तो इसलिए इसमें ई यूज़ नहीं करेंगे हम. जैसे डू क्वाल्मस्ट, एयर जी एस ईयर, क्वाल्म्ड एंड इश क्वाल्म, wir sie qualmen. Rule number 3, CH, SCH, TH ending stems. If the preceding H is a part of a consonant cluster such as CH, SCH or TH, then A is inserted after the stem in the do, ear, Z, S and ear forms.
अगर कोई भी जो स्टेम हो एन पे एम पे एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले सी एच एस सी एच और टी एच आ जाते हैं तो उसमें हम ई का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रैशनन टू कैलकुलेट, स्टेम रैशन, रैश. सो दू के लिए आएगा यहाँ पे रैसनेस्ट, एयर जी एस ईयर के लिए आएगा रैसनेट, इश रैशनर, वीयर जी जी रैशनन. Now rule number 2, omitting s in the do form. कभी कभी हम s जो do form में s आता है st उसमें से s को ड्रॉप कर देते हैं. s, set, ss, x और z ending stems. If the infinitive stem ends in s, set, ss, x or z, then t is added after the stem in do form, not st. For example, Tanschen, Hyson, Hassan, Fikson or Jitson. So there are many examples here. Tanschen, Hyson, Hassan, Fikson, Jitson, Razan, Fasan, Grushan, Spasan, Bisan, Wisan and Nizer, Cushion and Ferguson. So let us see the conjugation of Hyson, Tansen, Hassan and Fiktion. Du heist, tanst, hast, fikst. Er, sie, es, ihr, heist, tanst, hast and fikst. Means no change. Du, er, sie, es and ihr. There is no change. Ich, heiße, tanze, hasse, fikse. Where Zizi, Hyson, Tanchen, Hassan and Fikson. Rule number 3, IE ending stems. If stem ends in IE, no extra E is added. Example, knien, stem knie. Ich knie, du kniest, er, sie, es, ihr kniet, wir, sie knien. Rule number 4, Miss EL, ER ending stems. If the infinitive stem ends in EL, ER. अगर जो कोई stem EL और ER पे end होता है तो then N is added after the stem in Z and plural forms. तो हम N का use करते हैं. And drop E in the first form singular ish. इसके साथ जो E use होता है उसमें उसे हम drop कर देते हैं. For example, Swanjan, ERN, Klingel, to ring and Jamen to collect. Ich wandere, Klingler, Sammler. Du wanderst, du klingest, sammelst. Er, sie, es, ihr wandert, klingelt, sammelt. And wir, sie wandern, klingen एंड जामेन. इसके साथ जो ई आता है उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इश वांजर, इस वांजर. दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें ई भी हम हटा सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, ज़रूरी नहीं है. तो इसे अगर हटा देंगे तो हम बोलेंगे इस वांजर, एंड अगर नहीं हटाएंगे तो इश वांजर. केवल इश के साथ होगा. जैसे इस क्लिंगलर, EREL और EL जो था यहाँ पे उसके साथ हमने जो ई है उसको omit कर दिया है इसके साथ. There are some examples here. You can check them. Some examples here is Sammler so viele Informationen. I am gathering as much information. Du sammelst deine Sachen. You are gathering your things. Ihr sammelt Notizen dafür. He is collecting notes for it. So that is all for this video. So we'll learn the conjugation of irregular verbs in next video. So till then, choose.